Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Indian Constitution, and this will be beneficial for your All India Bar examination as well as any state judiciary examination where the Indian Constitution plays an important role. So our first question is, communalism is opposed to option A, secular credential, option B, ethnic conflict, option C, friendship between class, or is it option D, that is all of the above? यहाँ हम communalism की बात कर रहे हैं. And the correct answer to this question will be option number A, that is secular credential. तो communalism जो होता है that is opposed to the secular credential. Our next question is, globalization gives primacy to unbridled welfare means option B, trade, option C, socialism, or is it option D, consumerism? ग्लोबलाइजेशन की यहाँ बात हो रही है. सी कुछ क्वेश्चंस मैं आउट ऑफ द बैरेक्ट भी लेकर आई हूँ बिकॉज आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बैरेक्ट से भी आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आउट ऑफ द बैरेक्ट रहे, आपको क्वेश्चन के आंसर्स खोजने में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को भी करवा रही हूँ. The correct answer to this question will be option number D, that is consumerism. Our next question is, see, this question is directly from the Bare Act. The original jurisdiction of Supreme Court is contained in. इनमें से कौन से आर्टिकल में हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में देखते हैं? Is it option A, that is article 131, option B article 121, is it option C article 137, or is it option D, that is article 139? हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में. अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शनल पावर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एज वेल एज रिवर्जनरी जुरिस्डिक्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 131 टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. The next question is, the power of the president to consult the Supreme Court is under which of the following articles? President की पावर की हम बात कर रहे हैं to consult the Supreme Court. तो इनमें से कौन से आर्टिकल में वो पावर दिया हुआ है? Is it option A, that is article 137, option B article 143, is it option C article 32, or is it option D, that is article 141? We are talking about the power of the president to consult the Supreme Court. And the correct answer to this question will be option number B, that is article 143 provides the power of the president to consult the Supreme Court of India. The next question is, the sequence of procedure for passing a bill in the House is. हम जब बिल पास करते हैं तो वो कौन से सीक्वेंस में होता है, मतलब उसकी प्रोसीजर क्या होती है? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट हम रीड करते हैं, देन कमिटी स्टेज पर वो पहुंचता है, देन रिपोर्ट स्टेज, देन सेकेंड रीडिंग एंड देन थर्ड रीडिंग, और इज इट ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, देन सेकेंड रीडिंग, देन कमिटी स्टेज, देन रिपोर्ट स्टेज एंड देन थर्ड रीडिंग? इज इट ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, देन सेकेंड रीडिंग, then third reading, then committee stage, and finally the report stage? Or is it option D, that is the first reading, then committee stage, then second reading, and then third reading? So question number 140, we are talking about the sequence of procedure. Okay, sequence की हम बात कर रहे हैं for the passing a bill. Question number 140. And the correct answer to this question will be option number B. That is, we have the first reading, then we do the second reading, then it comes at the committee stage, then report stage, and finally the third reading. See, मैं ये question आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ because you all know कि हमारे criminal laws को पास कर दिया गया है, नए criminal laws लागू हो गए हैं from 1st of July और वो हमारे syllabus का भी part बन चुके हैं. इसीलिए ये question पूछा जा सकता है कि what is the procedure for passing a bill? Okay. The next question is, in a federal system, guardian of the constitution is.
दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल सिस्टम होता है, एक यूनिटरी सिस्टम होता है। ओके, फेडरल सिस्टम की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन होता है? इज इट द पार्लियामेंट्री, जुडिशियरी? इज इट ऑप्शन सी दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन होता है? दैट मीन्स हु कीप्स द चेक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द जुडिशरी। इट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी राइट को वायलेट करके हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, या कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द जुडिशरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to organize a village panchayat as units of self government is an example of। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना इज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और ये इनमें से कौन से प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है? इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ लिबरल प्रिंसिपल, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, और इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव? हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल। जो विलेज पंचायत का कंसेप्ट है ये गांधीयन प्रिंसिपल के द्वारा हमने लिया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 years to 18 years। मैं बता दूं, अर्लियर वी हैव 21 years ऑफ एज, 21 साल की उम्र के बाद ही हम कहीं वोट दे सकते थे। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दैट मीन्स आर वोटिंग राइट्स। लेकिन एक अमेंडमेंट आया और जिसके द्वारा 21 ईयर्स को 18 ईयर्स में चेंज कर दिया गया। दैट मीन्स अब 18 ईयर्स प्लस वाले सभी लोग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू वोटिंग राइट्स उन्हें मिल जाती है। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये चेंजेस करे गए थे? Is it option A, that is 42nd amendment? 42nd amendment, this is one of the biggest amendment done in our constitution, और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। Is it 86th amendment? Is it 61st amendment? or is it 42nd amendment? This option has been repeated। ठीक है, तो इन तीनों में से आप जवाब दीजिए। एडल्ट सफरेज हमने 21 ईयर्स से 18 ईयर्स एज कर दिया वोटिंग राइट के। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय 61st अमेंडमेंट द एज ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 इयर्स टू द 18 इयर्स। ठीक है, और अगर 86th अमेंडमेंट की हम बात करें तो 86th अमेंडमेंट के द्वारा हमने आर्टिकल 51A में एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, President of India can dissolve the House of People on the recommendation of। See, जो House of People होता है that means the लोक सभा और the lower house, इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। इसकी टेन्योर 5 years की होती है, लेकिन उससे पहले भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं। that means प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकती है। तो वो किसके रिकमेंडेशन पर करती है? Is it option A, that is vice president? Is it option B, that is chief justice? Is it option C, Chief Justice of India? ये Chief Justice of any High Court है, okay, of High Court. Next option is Chief Justice of India, or is it Council of Ministers? अगर हम राज्यसभा या अपर हाउस की बात करें तो उनका टेन्योर 6 years का होता है और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। बट लोकसभा के मामले में 5 year का टेन्योर होता है और 5 years के बाद न्यू पार्टी आती है या फिर इलेक्शंस होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन फेडरल सिस्टम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूनिटरी सिस्टम अंडर। सी, इंडिया का जो सिस्टम है दैट इज अ फेडरल सिस्टम, और इसे ट्रांसफॉर्म करा जा सकता है यूनिटरी सिस्टम में। तो इनमें से कौन से मामले में हम कर सकते हैं? Is it Article 368, Article 356, Article 360, or is it Article 352?
इनमें से किसके अकॉर्डिंग वी कैन ट्रांसफॉर्म द फेडरल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री टू अ यूनिटरी सिस्टम? अगर आपने इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान फेडरल सिस्टम को हम यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 352. इट टॉक्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट द state emergency or the president rule, and article 360 talks about the financial emergency. लकीली अभी तक हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं किया गया है. स्टेट इमरजेंसी हमने कई बार लागू कर लिया है एंड नेशनल इमरजेंसी भी देश में लागू हुए हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स. फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार होता है, ये हमें पार्ट 3 में मिलते हैं, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं? इज इट फ्रॉम आर्टिकल 11 टू आर्टिकल 16, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 61, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151? क्वेश्चन नंबर 146. आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. फंडामेंटल राइट्स हम आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक देखते हैं, एंड फ्रॉम आर्टिकल 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Untouchability Offence Act 1955 was renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 in which of the following year? Untouchability Offences Act को रीनेम कर दिया गया था as Protection of Civil Rights 1955. तो कौन से ईयर में ये चेंज किया गया था? Is it option A that is 1961, option B 1952, option C 1976, or is it option D that is 1974? Question number 147. And the correct answer to this question will be option number C, that is in 1976 the Untouchability Offence Act 1955 was renamed as the Protection of Civil Rights Act. And untouchability हमारा fundamental right है कि no one can use the untouchability, मतलब right against untouchability. Okay, right against untouchability हमारा fundamental right है. The next question is right to property was omitted from part 3. See, right to property हमारा एक fundamental right था जो कि part 3 में available है, लेकिन इस right को struck out कर दिया गया था and इससे add कर दिया गया as a legal right under article 300A. तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये एक लीगल राइट है. तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था? इज इट 86th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, और इज इट डन बाय द 81st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 148. राइट टू प्रॉपर्टी was omitted from part 3 and was added as a legal right in article 300A. And the correct answer to this question will be option number B, that is from the 44th Amendment Act. Remember this question because this is very important. Right to property आपसे पूछा जा सकता है. The next question is the watchword of the parliamentary government is. Watchword अगर की हम बात करें parliamentary government का तो क्या है? Is it indissolubility, checks and balances, political biasness, or is it responsibility? ये थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बिकॉज ये डायरेक्टली आपको बैरेक्ट में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी है तब आप इसका आंसर दे पाएंगे. And the correct answer to this question will be option number D, that is responsibility. Our next question is, and this is the last question, who presides over the joint session of the parliament? I think yesterday also I have asked this question. Who presides over the joint session of the parliament?
Is it option A, that is Speaker of Lok Sabha? Okay. Is it option B, Prime Minister? Is it option C, the President? Or is it option D, that is the Chief Justice of India? पूछा जा रहा है who presides over the joint session of the Parliament? एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ उन सभी बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए जो लोग भी AIB के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और जो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।